टिप्स एंड ट्रिक्स में कुछ ज़्यादा नहीं है, बट वी शुड encourage people to be more active. Fine, if you are working for a longer period of time, then it is advisable that you can stand up and take a walk. Then you should stretch your arms, stretch your neck after regular intervals so that you cannot end up into an injury. Oh, okay. So you need to work on your stretches, work on your mobility, work on your basic strength, which is required for your functional activities. Hi guys, welcome to the Yash Desai podcast. This one's another episode, and it is said that with great muscles comes great injuries. And of course, I felt that because I've had a major lower back injury. Like आप एकदम उठ के आप बैठे हो और एकदम से आप उठ जाओ, तो कभी ना कभी आपका कोई मसल टिश्यू अगर ट्विस्ट हो जाता है या समथिंग लाइक दैट हैपेंस, तो भी आपको इंजरीज होती है. या आप एक कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हो, सुबह से शाम तक एक चेयर पे बैठे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लोअर बैक इंजरीज का प्रॉब्लम रहेगा या स्पासम का प्रॉब्लम रहेगा. या इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ एंड यू आर वर्किंग इन किचन 24/7, सो कॉन्स्टेंटली वो बेलन करते करते काफ़ी लोग इंजरीज होती है उनको रोटी बनाते बनाते भी. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंजरीज, ऑफ कोर्स देयर इज दिस मेथड दैट वी कॉल फिजियोथेरेपी. इट हैज़ proven to be the most effective, at least in my case and my scenario. और फिजियोथेरेपी के बहुत सारे फ़ायदे हैं. काफ़ी टाइम ना स्पोर्ट्स थेरेपी, लाइक स्पोर्ट्स इंजरीज से लेके ऐसी कॉमन इंजरीज काफ़ी लोगों में होती है. सो आज जो पॉडकास्ट पे है, ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड और ही हैज़ डन हिज मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी. सो प्लीज़ वेलकम माय डियर फ्रेंड एंड अ वेरी गुड फिजियोथेरेपिस्ट, मिस्टर श्रीनाथ व्यास, ऑन द पॉडकास्ट टुडे. Thank you. I would like to add one thing that with great injury comes great responsibility too. Exactly. Why not? And with great responsibility comes you. You guys are superheroes Exactly. behind every athlete's success. And how do you see, how do you see yourself in that position, Singhu? See, as we talk about sports injuries, so when you are into sports, Correct. in the sports environment, there is a whole team who looks after the betterment of athletes, naming them the coaches, assistant coaches, team doctor, team physiotherapist, team psychologist, team measure, etc. So this is the whole team which looks after the athlete, and me as the sports physiotherapist looks after their injuries on field as well as off field injuries. ओके. सो सबसे पहले तो इतना डिटेल में हम जाएंगे, पर सबसे पहले यू टेल मी, हाउ डिड फिजियोथेरेपी हैपन टू यू? कैसे फिजियो तुमने करा? You were not planning that. That is something I'm very sure of because we have been school friends, knowing each other since we both were very fat. He's still on the way of losing Yes, a couple I'm of extra trying. pounds, Yeah. which I always tell him to do and keep pushing him. So yeah, just tell me that how did you get into this? See, exactly. As you know, after we finished our school life, Correct. there was a phase when I have to decide about my career. So it happened like I met my cousin who was a 1 year senior to me. She was into physiotherapy, and I just consulted her as she was someone who is elder to me. I consulted her that you have also done B group, and now there are various options apart from the other things. So I had options of doing MBBS, I had options of doing BDS, physiotherapy, etc. I had also an option of doing something in my family business too. So there was a wide opportunity which was in front of me. So somehow so it happened like I became more interested in physiotherapy since my childhood because I am a cricket fan. Correct. Yes. So when I saw someone getting injured on the field, and I saw the work of a sports physiotherapist who went into the ground and treated the athlete, so it crossed my mind again, and I recalled my childhood days, and I thought that this is the perfect field, and if I choose physiotherapy, somehow in the later life I will become a sports physiotherapist. So it was a goal which is now being coming to life. Yes. Not coming to life. You actually own a very good clinic now, and Thank you've been treating. Most welcome. You have been treating couple of more athletes across the sports association in Gujarat.
You have been recently affiliated with the football team, and bunch of other things that is going around. So सबसे पहले ना एक क्वेश्चन एकदम कॉमन रहेगा कि किसको फिजियोथेरेपी लेना चाहिए. जितनी भी पॉपुलेशन है, जितनी टाइप की पॉपुलेशन है, आई मीन टू से दैट इफ अ ह्यूमन बीइंग इज हैविंग डिफिकल्टीज इन एनी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, और सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो जो भी कोई भी पर्सन है, स्टार्टिंग फ्रॉम एन एथलीट टू अ होम मेकर to someone who is working in a MNC company, Correct. someone who is a laborer, someone who comes. So physiotherapy is for all the human beings who come from different status of the society. Okay. So basically आपको जो भी बॉडी में इम्पेयरमेंट्स है, आपको अगर कोई ऑर्थोपेडिक कंडीशन है, कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, या फिर कोई स्पोर्ट्स इंजरी है, या फिर आप वो एज ग्रुप में आते हो जो कि बड़े हैं, वी कॉल इट द जीरियाट्रिक पॉपुलेशन. इवन देयर आर सर्टेन फीमेल्स हु हैव इश्यूज आफ्टर देयर डिलीवरी. ठीक है, तो फिजियोथेरापी इज अ नॉन ड्रग थेरापी. करेक्ट. एंड वी गिव ट्रीटमेंट बाय मैनुअल थेरापी, इलेक्ट्रोथेराप्यूटिक डिवाइसेस, एक्सेट्रा. Okay, I think there are different types of methods in physiotherapy as well. Yes. Like what I can recall of during my piriformis syndrome recovery, I was having a session of IFT and a bunch of different exercises. I think we of course spoke about it. That time you were studying and probably completing your masters, and one of your principal was actually kind of giving me the treatment. Yeah, she was a professor in my college. Exactly. Yeah, sorry, professor. Yeah. So IFT I'm aware of. There is cupping therapy, there is needle therapy. So ये अलग अलग डिफरेंशिएशन क्या है डिफरेंट थेरेपीज में? मैं वही समझाता हूँ. देखो, सो फिजियोथेरापी इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ नॉन ड्रग थेरापी विच एम्स एट रिस्टोरिंग योर क्वालिटी ऑफ लाइफ. ठीक है, जो भी आपके बॉडी में स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल योर नॉर्मल एजिंग प्रोसेस, बट उसके साथ साथ आपकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज है डेली लिविंग की, उसमें जो आपको इम्पेयरमेंट्स है, उसमें आपको जो इश्यूज है, तो वी कैन इम्प्रूव दैट, वी कैन एड टू योर क्वालिटी ऑफ लाइफ. Fine. And talking about the treatment options is like we give treatment by electrotherapy. तो जो आपने IFT का जिक्र किया, ठीक है, तो जो different types of modalities हैं, they are the electrotherapy. Fine. Then comes the exercise therapy. Correct. Fine. And the other rest of the techniques are all allied techniques. They are? Allied techniques. Okay. What exactly they are? So allied health is something different. Allied health में आ गया, needling आ गया, ठीक है. Okay. So it is needling is basically a Chinese medicine. Yeah. Fine. So but now they basically take out blood from your. No. Needling में ऐसा नहीं होता, वैसा cupping में होता है. Cupping दो टाइप का आता है, dry cupping as well as wet cupping. Okay. Fine. तो उसमें in wet cupping they take out the blood. Oh, okay. And what exactly is needling all about? सो नीडलिंग का मैं आपको बताऊं, उसके बहुत सारे, देखो, जो भी ट्रीटमेंट हो, इलेक्ट्रोथेरापी हो या एक्सरसाइज थेरापी हो, उसके डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, उसके इंडिकेशंस भी होते हैं और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी होते हैं. फाइन. सो इंडिकेशंस का मतलब यह है कि ये चीज हमको कब देनी है और नहीं देनी. आई मीन इंडिकेशंस वो है कि ये चीज कब देनी है, ठीक है, और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस मतलब कि कब ये चीज नहीं देनी. Correct. So as an independent profession, what we have to do is when a person comes to us, we thoroughly assess the person. Okay. When a new patient comes, we thoroughly assess him or her, and then we do the diagnosis. We confirm the diagnosis. We match the diagnosis with other reports too. Fine. And we made a custom protocol for the patient, and we treat them accordingly by setting up goals. So एक गोल सेटिंग करते हैं कि ये पर्सन को ये इश्यू है, ठीक है. फॉर एग्जांपल के पर्सन को पेन है, फाइन. फिर उसको जो रेंज है, फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑपरेटिव टोटल नी रिप्लेसमेंट का केस है, फाइन. तो उसमें कुछ टाइम के बाद कोई फीमेल पेशेंट है, फॉर एग्जांपल, फाइन. तो उनको नी की जो रेंज है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड, फाइन. तो वी असेस कि उनको पेन है, फिर उनको रिडक्शन इन रेंज ऑफ मोशन है, तो हम पूरा असेसमेंट करते हैं. उसके बाद जो भी नीडफुल होता है वी प्रोवाइड दैट ट्रीटमेंट. ओके. एंड टॉकिंग अबाउट नीडलिंग हैज आल्सो मैनी इंडिकेशंस टू. सो बेसिकली क्या होता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंजरीज. वन इज अक्यूट इंजरी, अनदर इज द ओवरयूज इंजरी.
Okay. in sports. Fine. I think mine was overuse injury, right? Yes, yours was overuse Yeah. injury. तो क्या होता है कि जो अक्यूट इंजरीज होती है वो रिसेंटली जो इंजरीज होती है, फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल प्लेयर है, वो ग्राउंड पे खेल रहा है और खेलते खेलते एक खड्डे में उसका पाँव आ गया और उसका एंकल ट्विस्ट हो गया. करेक्ट. फाइन. तो वो जो इंजरी हुई उसको हम एक्यूट इंजरी बोलते हैं कि जो रिसेंटली हुई है. और जो इंजरी दैट इज डेवलपिंग ओवर द टाइम, आप एक मसल है उसको आप ओवर यूज कर रहे हो, फाइन, तो उसमें छोटे छोटे नॉट्स फॉर्म हो जाते हैं, ट्रिगर पॉइंट्स. फाइन. तो नीडलिंग वर्क्स इन ट्रिगर पॉइंट्स. ओके. तो वी ब्रेक द ट्रिगर पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ नीडल्स. एज आई सेड, इट इज नॉट द ओनली ट्रीटमेंट, इट इज एडजंक्ट द ट्रीटमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी के पास कोई केस आता है तो वी जस्ट नॉट किसी के पास कोई केस आता है तो वी जस्ट नॉट डू द नीडलिंग. फाइन. सीधा वो नहीं करते, पहले of हम course चेक वो- करते हैं कि उसकी नीड है हाँ. कि नहीं. करेक्ट. फाइन. देयर आर अदर ट्रीटमेंट अवेलेबल ऑल्सो. करेक्ट. सो सबसे पहले डायग्नोसिस होता है. डायग्नोसिस होता है पहले, उसके बाद हम उसका गोल सेटिंग करते हैं कि ये क्लाइंट की क्या हाँ. रिक्वायरमेंट है, कौन सी चीज़ों पे हम फोकस करते हैं. पहले हम पूरी जो कंडीशन है उसको हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद गोल सेटिंग करते हैं, उसके बाद उसका जो पूरा रिहैब प्रोटोकॉल है वो डिजाइन करते हैं उसकी नीड के मुताबिक. उसके Okay. बाद हम सेशंस चालू करते हैं और थोड़े थोड़े टाइम के बाद वी टेक रीअसेसमेंट्स ऑल्सो, जस्ट टू नो दैट उनका केस कहाँ तक पहुंचा है, कितना बेटर हुआ है. तो उसमें हमको भी क्लैरिटी मिलती है और उनको और भी उनको भी recovery क्लैरिटी मिलता है, मिलती है. दोनों मिलता है. या सो जैसे एकदम डिफरेंट थेरेपीज की अपने बात करी, डिफरेंट मेथड्स के बारे में. दूसरा एक मेथड है कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट, राइट? सो वो मुझे पता है कि फिजियोथेरेपिस्ट आर देयर आर टू, वो दो अलग अलग नाम है जितना मुझे पता है, इन अ वे कि भाई देयर आर पीपल हु हैव डन द स्पेशलिटी जस्ट इन कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट. I have met couple of physiotherapists who are against it. I am against it too. Okay. I mean not in that way. I mean जिसका काम उसी को साजे. एग्जैक्टली. सो जो जिन लोगों ने स्पेशलाइजेशन करा है कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट में, वो ऑफ कोर्स अपने फील्ड के बच्चे हैं. देखो, जैसे हमारा कोर्स है फिजियोथेरापी, आप यूएस में जाओ तो उधर अलग कोर्स ही है कायरोप्रैक्टिस. फाइन. सो क्या है कि यू कैन नॉट लर्न दैट थिंग इन सम शॉर्ट डेज ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स. फाइन. तो वो लोग करते हैं, people are also getting results, but I don't use it in my daily practice due to some other reasons. I don't use it in my daily practice. If they are good, that guys can continue doing whatsoever they like, but it is not physiotherapy. Fine. It is, I can say that it is some adjunct therapy or allied therapy. Basically aligning your body therapy. Yeah. In a way. Basically they correct your posture. Correct. Fine. They also assess that what is the issue in your posture and they do adjustments. What they do is chiropractic adjustments and people are getting results. Okay, so basically what you're trying to say is, if we have to put in like a difference between chiropractic treatment and physiotherapy, या अगर हमको एक difference create करना हो chiropractic treatment और physiotherapy में, basically ये है कि chiropractic can be a part of physiotherapy. If correct me if I'm wrong, but it's not the other way around. Vice versa नहीं हो सकता है, right? And it is going that way only. जो भी है वो ऐसे ही चल रहा है अभी. हाँ, नहीं, मोस्टली काफी लोग कंफ्यूज है बिकॉज लोग वो मतलब ज्यादा से ज्यादा रील्स वगैरह देख के दे tend to get misguided because if someone has done this course, fine, then they think that it is another feather in my hat. Okay. Fine. So it goes like that way. Okay. So again, explaining the difference between both, physiotherapy is something related to your muscle recovery, to your overall endurance and strength building in a way until that muscle is all ready to go all out and perform its natural endurance. Exactly. And chiropractic treatment is generally aligning your body, and it can be a part of the physiotherapy sessions that people are taking in a way. Maybe or may not be, depending on the doctor who is practicing that, and the speciality that he or she has in that particular field. So I think that answers to the most of the audience who are confused between chiropractic treatment and overall physiotherapy. So that is exactly why I asked this question to you.
Again, it is controversial. So there are many school of thoughts on this. I just said that what I have been seeing throughout the years and what feels right for me. After all, Correct. it's an individual choice about what to do. Correct. Coming back to the main point, like there are very common injuries apart from a regular life injuries. People who are very active individuals, right? Like myself, I've been working out like almost every day in a week. If not weight training, I'll be doing my cardio and weight, and probably putting that entire design, but keeping my body active. That is the basic criteria that I have according to my goals. Sometimes I'm losing fat, sometimes I'm putting on, I'm bulking up, sometimes a lot of things Depends on your shoots. Exactly, depends on my your- shoots and yes. bunch of other things. So I have tend to get more conscious after my major injury regarding to piriformis. That was like L4 L5 compression, and a very sad affair that would not want my worst of the enemies also to get this injury, because that is that painful. मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, मैं लिटरली अकड़ गया था. आई वॉज एट अ फ्रेंड्स प्लेस एंड रात के 3:30 बजे मैं उसके बेड से खड़ा हुआ और मैं पूरा जकड़ गया, अकड़ गया. आई कुड नॉट मूव. आई हैड टू कॉल I had to call the orthopedic later like 3:30 बजे के आसपास, and he prescribed a medicine. थोड़ा बहुत रिकवरी हुआ, बट उसके बाद it was all paining and all that. Then I took an orthopedic treatment, जो again मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेन किलर्स देते थे. तो जितना कोर्स चलता था तो तब तक मुझे अच्छा लगता था, उसके बाद मुझे फिर से पेन तो हो ही रहा था. And just after that, I got COVID and bunch of things happened. And, eventually I turned my back to physiotherapy. Sorry, no, I turned towards physiotherapy. And then I started feeling the, exact progress and recovery in terms of my muscles and in terms of my injury. That's how I can say that physiotherapy is, as you said, no drug therapy, and it is very helpful in my particular case. So my question would be कि भी जो active individuals है उनको बहुत सारी common injuries होती है. Let's say deadlift के टाइम हो गई, या कभी कभार pull overs के टाइम हो गई, कभी कभार chest press के टाइम हो गई, कभी कभार any exercise that any individual is doing. It can be male, female, doesn't matter. These are very common injuries. So what are the most common injuries that you have seen among athletes? It can be a weightlifter, it can be a cricketer, it can be a footballer, or any other sports athlete. See, there are two types of sports. First is the contact sports, another is the non-contact sports. Okay. Fine. So whether you are dealing with someone who is from contact sports, whether say football, fine. तो game specific बात करें तो उसमें injuries होती है. Ankle sprain are the most common injuries in football. I am practicing as a head physio in a football club right now. Correct. And I have also worked with the Gujarat State football team and SAG also. So what I treated was there were many cases of ankle sprains, there were cases of ligament injuries, then there were cases of concussion. In contact sports there is a lot more occurrence of concussion when two people collide against each other. Okay. So such injuries are very much interesting to deal with as per my experience. Okay. And which is the most favorite injury to treat? That's For not even me- a question. I would not want for anybody me- to get an injury, but yeah. See, basically, I love to treat ACL injuries, ligament injuries. ACL is a ligament inside the knee joint, and I have too much interest in treating that condition. Right now, at my clinic, I see 11 to 12 cases of ACL rehabilitation per day, apart from the rest of the conditions I treat. So you tend to say that these are the most common injuries that we're talking about. Yes, exactly. Nowadays, what happens is like many people who are not playing sports actively, but they play it recreationally. Fine. So apart from the 12 cases which I have of ligament injury today, 7 of them are from playing box cricket.
Okay. Youngsters nowadays are playing box cricket. I've been I hooked to wish it. I wish them to play, but at least warm up properly, Yeah. have some strength. Don't just go over there and just play, warm up properly, and then do proper cool down, and then develop your muscles in such a way that they can, endure the game specific demands of your body, and then you play. So of course people don't do basic warm up and all. I've been hooked to box cricket of lately. हमारा एक पूरा ग्रुप था आईपीएल वगैरह का, तो हम लोग ने स्टार्ट करा है. मैं भी था वो ग्रुप में. पर तुम नहीं आते क्रिकेट खेलने. So exactly my point. आओ, we are inviting you to play. But the thing is कि खेलने बुलाओगे कि ट्रीट करने बुलाओगे? दोनों. अच्छा है ना, एक से भले दो, क्या बोलते हो? So my point is कि जनरली जो वार्म अप वगैरह, लाइक आई एम एन इंडिविजुअल हु इज़ वेरी एक्टिव इन डे टू डे लाइफ. मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, कार्डियो कर रहा हूँ, फिर भी मैं जाके आई विल मेक श्योर आई एम डूइंग सम वार्म अप टू ओपन अप माई जॉइंट्स या जॉइंट मसल वगैरह, जिससे मुझको इंजरीज ना हो. ये तो बॉक्स क्रिकेट की और बहुत ही कॉमन लोगों की बात हो गई. बट वी हैव सीन दिस अमोंग टॉप नॉच प्लेयर्स जो काफ़ी सालों से इंजर्ड है. एंड नथिंग अगेंस्ट देम ऑफ कोर्स, बट द थिंग इज कि किसी जैसे कि कोई बहुत फेमस बॉलर हो गया जो काफ़ी टाइम से इंजर्ड है बिकॉज मे बी ऑफ हिज बॉलिंग एक्शन एंड ऑल. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? टेक्निकली बोलूं कि सिंपलर टर्म्स में एक्सप्लेन सिंपलर टर्म्स में शायद एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि मोस्टली आई थिंक काफ़ी सारे लोग अभी जो भी लाइक क्रिकेट फॉलो करते हैं उनको पता ही होगा कि कि नॉर्मल कि कोई भी प्लेयर्स हो गए हमारे, जैसे कि जसप्रीत बुमराह हो गए. ही हैज़ बीन इंजर्ड सिंस क्वाइट अ टाइम बिकॉज ऑफ हिज बॉलिंग एक्शन एज सेट बाय द बॉलर मेगराथ. उन्होंने बोला था कि एक टाइम के बाद उनको ये दिक्कत आएगा बिकॉज ऑफ हिज बॉलिंग एक्शन. Also, MS Dhoni suggested to Sri Lankan cricket that take care of the Pathirana. Yeah, Mahesh Pathirana. He has correct. also same bowling action which is similar to Malinga, and MSD also said that in the coming years if we do not take care of him in a proper way, he will end up having more injuries in his back. Yeah, exactly. Hardik Pandya also had a major injury related to his back. We wanted an all-rounder. उन्होंने भी काफ़ी टाइम उनका लिया. That's okay. Taking time, that is okay. And after a point of time, then it is about personal health along with your career. So you have to choose. So what is your overall take on that? Is something going wrong with physiotherapy, or how exactly is this thing? See, nothing is going wrong. Whatever happens for the best. And what I would like to add is that when you are working in a reputed sports academy or any reputed team of whether it be any sports, fine. So what people should do is that they should focus on load monitoring. That is? So load monitoring क्या है? For example, ट्रेनिंग होती है, मैचेस होती है, तो कौन सी ट्रेनिंग वीक में कितनी बार करानी चाहिए, कब रेस्ट पीरियड देना है, रेस्ट भी देना है तो कौन सी टाइप का देना है. देयर आर 2 टाइप ऑफ रेस्ट which are the active recovery as well as the passive recovery. Correct. Fine. So people should be made more aware regarding this. People should focus on load monitoring. और कोई भी मेजर पार्टिसिपेशन होता है, मेजर कोई भी टूर्नामेंट आती है, उससे पहले प्लेयर्स का MS की स्क्रीनिंग होना चाहिए, which is the musculoskeletal screening of the athletes, and the physios or the team doctors should be updated, and they should monitor the progress of the athletes, and they should also have the reports of the injury profiles of each and every athlete. Okay. So इससे उनको पता चलेगा कि कौन से प्लेयर में पोटेंशियल है इंजरी डेवलप होने का, तो इंजरी ना हो उससे पहले उनका प्रीहेप कर सकते हैं. ओके, फाइन. और अगर इंजरी हो गई तो उसके बाद जो भी एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट होती है, जो भी उसके प्लेयर के लिए नीडफुल है, तो वो उनको कराना चाहिए. और जो टाइम फ्रेम रहता है तो उसमें it should be made clear to the fans, it should be made clear to the the coaches and the player himself. Fine. कि कितना टाइम लगेगा, हम कब रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. The physiotherapy should give realistic goals. करेक्ट.
फाइन. सो एक तो रियलिस्टिक गोल सेटिंग होनी चाहिए कि माइलस्टोन सेलिब्रेशन भी होना चाहिए कि नहीं कोई मेजर इंजरी हुई तो नी इंजरी फॉर एग्जांपल मेजर इंजरी हुई कोई लिगामेंट इंजरी हो गई नी में फाइन. तो उसके बाद जो स्टेयर क्लाइंबिंग प्रोसेस है स्टेयर क्लाइंबिंग कब करना है वॉकिंग कब करना है विदाउट वॉकर कब चलना है. तो क्या है कि अगर आप सेलिब्रेट करोगे छोटी छोटी चीजें तो क्या है कि जो प्लेयर है तो उसको भी अच्छा लगेगा. He would be adhered more to the treatment. Fine. Correct. He would be reinforced. So you should also work on the psychological counseling of the person too while you are treating them. I think that's a good point because psychological criteria plays a very important role in the recovery of anybody. जो अपने बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि विल पावर रखो. Yes, exactly. And people nowadays are having less willpower as compared to the people who lived 40 years ago. Yeah, I think that's certainly the case. And another thing that I've noticed, Rishabh Pant had a major accident last year. Yes. The way that he has recovered, he's still recovering though, but the way that we have seen him so far, we wish all the faster recovery that we possibly could for him. He has a very great progress. Exactly. And we wish him all the very best for his recovery. Exactly. So we missed him more in the World Test Championship. I know, right? His value was more, He was missed because he had that capability in terms of wicket keeping. Again, that might be quite controversial. कि इसको लिया उसको नहीं लिया. Again, we don't want to get into that. But the thing is, as a player, certainly he is a top-notch player that we miss with the kind of talent that he is. And I think he's very very disciplined in terms of his recovery. So talking about discipline, what athletes have you trained or which athletes have you trained who have been more disciplined in terms of their recovery? See, basically I have worked with Sports Authority of Gujarat. Correct. It is a government sports authority. I work with the SAG Football Academy as the sports physiotherapist. और हमारे में क्या होता था कि कोच आते थे उससे पहले एथलीट्स ग्राउंड पे आ जाते थे. फाइन. सो डिसिप्लिन का तो कोई सवाल ही नहीं था. ऑल द प्लेयर्स वर डिसिप्लिन. कोचेस आते थे उससे 20 मिनट पहले दे यूज्ड टू कम एंड दे स्टार्टेड वार्म अप. ओके. उसके बाद कोच आते थे लाइनअप होता था. उसके बाद दे स्टार्टेड देयर वार्म अप एंड देन दे स्टार्टेड द ट्रेनिंग प्रोटोकॉल. और apart from the morning and evening sports sessions, what happened was in the afternoon I was being assigned their task of rehabilitation. I was given a separate cabin for rehabilitation and I was there for a period of 2 to 3 hours, and in that period they used to come and get their treatment done. Okay. So I had also made a register और वो आते थे और उनका सब एंट्री टाइम इन टाइम आउट टाइम क्या एक्सरसाइज की थी सब रिकॉर्ड होता था. एंड डेली आई नीड टू अपडेट दैट टू द कोच. ओके. फाइन. सो क्या है कि कोच को भी पता चले कि ये प्लेयर इंजर है क्यों है वो कब अंदर आएगा. फाइन. सो जब तक उसका रिटर्न टू प्ले नहीं होता तो ही कैन नॉट डू ट्रेनिंग एंड ही कैन नॉट पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशंस. सो जो भी इंजरी होती है उसके बाद आई असेस हिम और हर. उसके बाद आई मेक अ रिहैब प्रोटोकॉल. फाइन. एंड देन आई इनिशिएट सर्टेन स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ड्रिल्स. उसके बाद हम उसका रिटर्न टू प्ले कराते हैं. पहले रिटर्न टू ट्रेनिंग एंड देन रिटर्न टू कॉम्पिटिशन. ओके. आफ्टर चेकिंग सर्टेन पैरामीटर्स. But who has been the most disciplined in terms, because see, there are two things. After all this list of protocols that we need to follow as an athlete with certain associations, वो एक होता है. But कई कबार ना कोई एक बंदे में या बंदी में खुद की एक चाह होती है कि मुझे इतना जल्दी रिकवर होना है, जो विल पावर की अपन ने बात करी. सो ऐसा कोई एथलीट यू हैव treated who has been phenomenal with in terms of discipline, in terms of timing, and in terms of willpower? Yeah, so basically there was a guy in a football academy which I worked previously. Okay. He was a decent human being and he had a similar injury which we talked previously. He had injury of stress fracture in the lumbar spine. Oh God. And the rehab lasted for 5 to 6 months. Okay. And then that guy scored a goal, winning goal for the team, and I got my work satisfaction. Of course. When he scored that goal. So during the process of 5 to 6 months, he was there with me. He was on the bench. He completed all the tasks which I had given him, and he was
and there was a success in his rehabilitation. Of course, I think psychology again played a major part into it. Yes, exactly. Right? So that's great. That's great. That's exactly what I wanted to know. There are again, this also answers another question that I was about to ask you कि एक ऑन फील्ड रिहेबिलिटेशन और ऑफ फील्ड रिहेबिलिटेशन क्या होता है. तो आई थिंक this itself in it is an answer कि भी रिहैब्स अलग अलग टाइप के जैसे हुए, एज यू सेड कि ये प्लेयर पूरा बेंच पे बैठता रहा जब तक वो रिकवर नहीं हो गया. सो आई थिंक ऑफ फील्ड रिहेबिलिटेशन इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी. और हमारे में बेंच पे बैठना मतलब वो मैचेस में क्या है कि वो भी ध्यान रखना पड़ता है कि जब उसकी जो पूरी टीम है फुटबॉल की या कोई भी स्पोर्ट की बराबर, वो लोग अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ये बंदा तो ट्रेन भी नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, वो बेंच पे नहीं बैठेगा. वी एज अ फिजियो शुड डिजाइन अ सर्टेन प्रोटोकॉल जहाँ पे जो इंजरी है उसका तो हम रिहैब में रूम में करते ही हैं, रिहैब रूम में हम करते ही हैं, लेकिन उसके सिवाय के जो बॉडी पार्ट्स है वो कैसे हम एक्टिव रखेंगे. करेक्ट. तो उसको ग्राउंड पे हमको वो टास्क देने पड़ते हैं. फाइन. और वो टास्क उसको कंप्लीट करने के बाद में मतलब उसका पूरा एक प्रोसेस खत्म होता है रिहैबिलिटेशन का और फुल 110% रिकवरी का. सो ऑफ कोर्स यार ये बहुत ही मतलब ना रिकवरी बहुत ही इट्स वेरी हैवी ऑन योर मेंटल हेल्थ और इट्स वेरी यू नो it takes a lot of things from you in terms of overall recovery and things and stuff. So wish all the great and speedy recovery to all your patients, and of course I would want them to be at their 100% thing. Another thing जो तुमने अभी बोला ना तुमने कि you cannot, I think you said that during the starting of the podcast कि you cannot reverse the aging process of a person. So I was नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला था. मैंने ये बोला था कि जो भी स्ट्रक्चरल इम्पेयरमेंट हो गए हैं आपके बॉडी में, हाँ फाइन, तो वी कैन नॉट रिवर्स दैट. फॉर एग्जांपल ऑफ अ 60-year-old फीमेल, हाँ तो मान लो कि उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है अपने घुटने में, फाइन, करेक्ट. तो लास्ट ऑप्शन इज द पार्शियल नी रिप्लेसमेंट और द टोटल नी रिप्लेसमेंट. करेक्ट. लेकिन अगर उनको वो नहीं कराना, फाइन, तो again I will explain the person that there are some structural degenerative changes, there is wear and tear in your knee joint, fine, तो we cannot reverse that wear and tear, लेकिन उसकी वजह से आपको कुर्सी से बैठ के उठने में जो इश्यू है, चलने में इश्यू है, तो वो इश्यू हम सॉल्व कर पाएंगे. we can improve your quality of life, we can improve your activities of daily living, लेकिन अंदर जो जॉइंट में जो चेंजेस हैं वो तो हो चुके हैं, we cannot do anything. So एक एज के बाद एक एज ग्रुप में आकर भी काफ़ी सारी ऐसी इंजरीज होती होगी, या इंजरीज से भी ज़्यादा आई वुड लाइक टू पुट इट इन अ वे के मसल वीक हो गया, जो बेसिकली एंड्योरेंस ही बढ़ पाएगा, या ऐसा कोई कंडीशन हो गया जैसे कि नीज का आपने बोला कि नीज वाला एक सिनेरियो अगर हो गया है कि नीज ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, प्लेट्स घिस गई है, सो वो बेसिक ट्रीटमेंट से यू कैन प्रोलॉन्ग द लाइफ, यस, राइट. बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल इन मच ऑफ द केसेस के नी रिप्लेसमेंट लोग कराते ही है और कराना ही पड़ेगा, कराते ही है लोग, और उसके बाद भी फिजियोथेरापी होती ही है. एग्जैक्टली. द मेन थिंग आफ्टर a knee replacement surgery is getting a physiotherapy for the recovery. Yes, exactly. Right. So ऐसे कौन से common चीजें हैं apart from this thing, like very certain thing in a certain age, let's say 50 के बाद ये हुआ, 40 के बाद ये हुआ, या 60-70 के बाद अगर ये injuries या एक scenario common है लोगों में, it can be male, female, anybody. See, वो बात करेंगे तो उसमें क्या होता है कि देयर आर डिफरेंट एज ग्रुप्स, एंड डिफरेंट एज ग्रुप्स के जो लोग हैं वो कौन से ऑक्यूपेशन में है, तो उसके हिसाब से भी डिफरेंट इंजरीज का कैटेगराइजेशन है. लेकिन हम बात करें कि फॉर एग्जांपल देयर इज समवन हु इज इन हिज 40s, वर्क्स इन अ MNC कंपनी, तो क्या है कि उनको बिकॉज ऑफ हिज प्रोलॉन्ग पुअर पोस्चर, उनकी वजह से उनको नेक पेन है, पूरा दिन कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो उनको नेक पेन है, फाइन, उनको बैक पेन है, फाइन, तो ये सब चीजें वो टाइप की पॉपुलेशन में ज्यादा कॉमन है. करेक्ट. उसके बाद कोई हाउसवाइफ है, कोई होम मेकर है, तो उनको डेली एक्टिविटीज में घर के काम करने पड़ते हैं, तो उनको हिल पेन हो सकता है, नी पेन हो सकता है, फिर उनको रिस्ट पेन हो सकता है,
फाइन, तो कौन सा ऑक्यूपेशन है, कौन सी एज ग्रुप है, उसके हिसाब से इंजरीज का कैटेगराइजेशन है. And Okay. injuries like conditions like frozen shoulder are common in males. Exactly. Frozen shoulder is more common in people who are 40 plus, also who have diabetes. Okay. Fine. So there are certain conditions which are prone to happen in certain age groups. Okay. Diabetic patients जो आपने the thing that you said, okay, because of a medical condition also sometimes the muscle tends to get weaker. So ऐसे कौन से conditions हो सकते हैं और हमको ध्यान रखना चाहिए after a certain age? The advice that we can take into consideration for the audience who is above a certain age, let's say 40 के बाद. Now I think 40 के बाद लोगों को generally अभी तो 20-30 में भी हो जाता है, but general criteria on an average after 40. वो conditions, they are namely, one is the cervical spondylosis. Okay. Means neck pain हो सकता है. एकदम लेमन में बताओ. एकदम लेमन में बताता हूँ. नेक पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, फ्रोजन शोल्डर हो सकता है. फाइन. देन ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, हील पेन हो सकता है. ये सब चीजें दे आर वेरी कॉमन इन सच एज ग्रुप्स. तो ये चीज ना हो, जैसे कि जितने भी यू हैव नेम राइट नाउ कि भाई ये है. सो ये एक चीज ये कंडीशन ना आए कोई भी एक इंडिविजुअल की लाइफ में, तो कौन से प्रिकॉशंस ले सकते हैं नॉर्मल लोग जो इतने एक्टिव नहीं है? I always tell people to get weight training because after a certain age you need to work on your muscles, you need to work on your strength, you need to, because वो naturally कम होने ही वाला है. मैं आज 100 किलो उठा रहा हूँ, मैं शायद 50 साल या 60 साल का होऊंगा, मैं नहीं शायद उठा पाऊंगा उतना. बट अगर मैं रिगरसली वो चीज़ मेरे लाइफस्टाइल में इंक्लूड करता हूँ तो वो होगा. बट लोग इतने एक्टिव नहीं है, तो उनके लिए कौन सी एक्सरसाइजेज है जो बैठे बैठे कर सकते हैं या वो एक एडाप्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में, जिससे कि वो चीज़ उनको ना हो? I would like to correct you. Not weight training. What they need to do is, there is one simple answer. It is the functional training. Correct. Fine. तो उनको फॉर एग्जाम्पल सपोज एक होम मेकर है, उनको आटे का जो पैकेट है 10 kgs का वो ऊपर रखना है किचन डेस्क पे. फाइन. किचन में रखना है नीचे से उठा के. तो क्या है कि वो ऐसा प्रैक्टिस करे वेट ट्रेनिंग में. सपोज दे डू प्रैक्टिस ऑफ 20 kg डेड लिफ्ट. Fine. So they would easily can lift 10 kg ka atta from the ground and keep it in the kitchen. So such are the example of functional training. Okay. दूसरा एंड्योरेंस और स्टेबिलिटी के लिए कौन सा एक्सरसाइज? लाइक मेरे को याद है मुझे जब ये पेरिफॉर्मिस वाला सिंड्रोम हुआ था तो डॉक्टर सजेस्टेड मी कि इफ यू आर सिटिंग स्टेगनेंट फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड एट योर ऑफिस और ऑन योर डेस्क और समथिंग लाइक दैट, तो आप एक अपना पैर लीजिए और पैर यू जस्ट हैव टू रोटेट योर एंकल्स देयर. सो ऐसी जो टिप्स एंड ट्रिक्स थे, तो वो जनरली व्हाट वुड यू लाइक टू टेल पीपल? टिप्स एंड ट्रिक्स में कुछ ज्यादा नहीं है, बट we should encourage people to be more active. Fine. If you are working for a longer period of time, then it is advisable that you can stand up and take a walk. Then you should stretch your arms, stretch your neck after regular intervals, so that you cannot end up into an injury. Oh, okay. So you need to work on your stretches, work on your mobility, work on your basic strength, which is required for your functional activities. Day-to-day life की activity जितनी भी है. So functional training should be encouraged. Frequent breaks between work is encouraged. Okay. And also working on your mobility is encouraged. Okay. So this sounds good and जितना भी टिप्स एंड ट्रिक्स लाए, होप लोग ले उस चीज़ को सीरियसली और वो चीज़ अडाप्ट करे अपने लाइफ में, बिकॉज ये सब इंजरीज या फिजियोथेरेपी वगैरह बहुत ही कॉमन चीज़ अगेन होती है आफ्टर यू गेट दिस इंजरी. सो ऑफकोर्स फिजियोथेरेपी तो लेना ही पड़ेगा, बट कहते हैं ना प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर. सो वो एक चीज़ है. सो दैट इज समथिंग दैट वी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ योर एडवाइस, श्रीनाथ. I have seen couple of physiotherapists. I'm not making this very controversial again, but I have seen couple of physiotherapists
minting money and not giving correct advice. I did not understood. Can you please repeat again? Like, there is a darker side to every industry. For gym industry, it might be trainers who are ill knowledge, or they don't even have a certified degree to train people. Still, they are doing it with a lot of lack of knowledge. Like, if you talk about me, I know what fitness is because I've learned it, one hand, like one hand with my trainers, और मैंने सीखा है उस चीज को मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद. But I'm not a certified trainer to train people about it. Yes. I can share my experience with you. You should eat this, eat that, according to your particular goal and things and stuff. But I always recommend people to go to a trainer, जाके advice लो, diet बनवाओ अपना, and take a professional expert advice in that particular terms. So ऐसा ही फिजियोथेरेपी में जैसे होता है, जैसे ऑर्थोपेडिक्स आर कंप्लीटली अगेंस्ट फिजियोथेरेपी. No, ऐसा Couple नहीं of है. them. No, ऐसा नहीं है. पहले ऐसा था, लेकिन क्या है कि now there is a team approach. Fine. हाँ. आप हमसे नहीं हो, हम आपसे नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से हैं. Correct. Fine. So it works like that. There is always a team approach. और जो आपने बोला कि ये होता है, they are printing money. तो ऐसा पहले होता था, but now we have council, we have a state council who looks after certain malpractices which are happening. But now such malpractices have come under control, and people nowadays are very much educated and they are much aware. First of all, if they get a reference, they will type their name in Google और वो उनके पास जाएंगे. Fine. अगर कोई reference मिला तो वो भी वैसे भी उनके पास जाएंगे. Okay, I think that the bunch of applications have also come into play. Yes, like Practo exactly. and all, right? So कोई malpractices अभी नहीं होती, और जो होती है तो उसके सामने there are certain bodies which looks after certain things. Correct. So that's another good way of looking at it, and I hope कि वो ना हो लोगों. Yes, अभी तो नहीं होता. मैंने तो नहीं देखा है, ना कभी सुना है. But as a person who is not from the same industry, might be you have come across certain thing, but it is not like that. Okay. And while taking therapies, what is the first thing that as a normal audience, एक normal audience के perspective से मुझे ध्यान में रखना चाहिए कि मुझे ये फिजियो के पास जाना चाहिए या फिर ये फिजियो के पास जाना, in terms of degree and certification courses? Yes, exactly. So क्या है कि after your 12th standard, we have मतलब after completion the 12th standard, there is a thing that there is the course of Bachelor of Physiotherapy, which is of 4.5 years. Okay. 4 years of study. उसके बाद 6 महीने का internship. उसके बाद you are awarded the degree of Bachelor of Physiotherapy. Correct. Fine. BPT के बाद भी you can start your clinic, you can work somewhere. Okay. There are no restrictions. You are eligible to practice. Fine. After registering in a council, as I said. Correct. Fine. State council भी है, national council भी है. Fine. उसके बाद क्या है कि you can do your master of physiotherapy. It is being done in orthopedics, neurology, community health and rehabilitation, Correct. women's health, sports physiotherapy, and much more. Fine. So I have done my masters in sports physiotherapy. Correct. तो क्वेश्चन आपका था कि कौन सी इंजरी के बाद किसके पास जाना है. Fine. So it completely depends on your preferences. So अगर someone comes to me for women's health, fine, I can also refer to someone who has done masters in women's health. Correct. Fine. We refer certain clients to some other counterparts of our fraternity. Like I believe that you suggested me a physiotherapist with regards to my brother-in-law's health, who was having a neuro syndrome. Yes, exactly. And he was treating him accordingly. Yes. You again treat sports injuries like footballers है, cricketers है, या normal लोग जैसे box cricket आपने बोला कि एकदम लोग normally मेरे जैसे लोग जो फिर कुछ नहीं जिम करते हैं. But I also treat such neurological conditions also. जो भी मैंने बोला कि अगर किसी ने bachelor's भी किया है तो he is also capable of treating certain conditions. उसमें कोई restrictions नहीं है. But in case if it is very advanced या कुछ ज़्यादा injury हो, then it is advisable कि वो उसके पास जाए, एक पर्टिकुलर पर्सन के पास जिन्होंने एक्सपर्टीज उनका वो है. बेसिकली depends in the sense what?
depends from person to person. What are their Conditions requirements? to conditions. Fine. If I have done if my specialty is in sports physiotherapy, तो अगर मेरा क्लिनिक से पेशेंट का घर इज लाइक 20 किलोमीटर्स, तो Correct. उसके लिए वो फिजिबल नहीं होगा कि वो डेली 20 किलोमीटर्स अपार्ट डूइंग हिज डेली वर्क कि वो आए. हाँ. So what we do is we refer someone whose clinic is near to the house of the patient. Correct. So we refer that patient. Okay, in that sense. Yes. एंड दूसरा एक चीज श्रीनाथ के जनरली पेशेंट्स ऐसे भी आते होंगे who have lost hope कि भी मेरे से नहीं होगा, मेरे से ये रिकवरी नहीं होगी because of the conditions, because some conditions are that serious. So how do they overcome that thing, and how music plays an important role in their life? Being a singer, I would like to know that. See, there are different school of thoughts on which approach you should add in your treatment protocol, but there are many moments in which the patients come to you and they have lost all their hopes regarding their rehabilitation. Correct. And what we need to do is we need to encourage them, as their guide, as their friend. We need to talk about the condition. We should give realistic goals, and somehow as a part of their relaxation, we should, ask them to, listen some songs, at least focus on their hobbies. If music is not in their hobby, then it's fine. They can do something else. But if their hobby is listening to music, we should encourage them to pursue their hobbies, which also plays a vital role in their rehabilitation. Oh, okay. And what exactly plays a role into your mental health when you are feeling down? With regards to, let's say, treating a patient, at times you get that fatigue, the work fatigue that we call, or probably during your physiotherapist, during your, student year of learning physiotherapy, there would have been times that you have had think, "Ki mere ko nahi karna hai." So how did you overcome that? And did music play an important part in that particular thing? Dekho, after I decide something, then there is not such a thing that I will not do that. So वैसा stage तो मेरे life में आया नहीं था कभी भी. Fine. So what happened was I was posted in a government hospital and I went to canteen of that hospital, and then I saw many doctors who were on the on the canteen table. They were वो लोग. So basically हुआ क्या कि मैं एक हॉस्पिटल में गया था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और उधर एक कैंटीन थी. तो कैंटीन में जो कॉलेज के बच्चे होते हैं who are pursuing their graduation, so वो लोग खा तो रहे थे, लेकिन खाने के साथ साथ वो लोग अपना होमवर्क कर रहे थे with that earphones on. Okay. So I came to know that music plays an important role while people are studying or doing some other work. So it also encouraged me. So उसके बाद मैंने भी अपने ईयरफोन्स लगा दिए और मैं भी उधर बैठ के मैं अपना होमवर्क कर रहा था, मैं कुछ पढ़ रहा था और साइड में म्यूजिक भी बज रहा था. So it also, music works as a companion when you are doing Correct. something. Fine. So you cannot feel lonely at times. If you are hearing something and if you are doing a work which you like or which you don't like, then if you are listening something, then you feel the presence of someone besides you. So you cannot feel lonely. What genres were you listening to? At that time or now? Anytime. Generally, whenever you feel, low or something. Whenever you feel like listening to music, what's your favorite genre? I hear your songs. That's some great advice, guys. Please log on to my YouTube. Please search Yash Desai on Spotify and things and stuff, and listen to, let's say, Hosla and different of other songs that I have. But I'm glad to know that a friend of mine is listening to me. Yes. Because most of them just keep on trolling me. Because that's what friendship is for, right? So, which is your, one song that you have listened of mine, feeling कि भी ये बहुत अच्छा है. Hosla was the amazing song out of all of them. Okay. And did it inspire you? Yes, somehow. The story of that song inspired me about how a person who was in the lowest moment of his life and then he came back to play. So, वो बहुत inspiring था. Okay. Nice work. Thank you so much. So it is Shrinath approved and a bunch of other things. So I think we have covered most of the questions in today's podcast, Shrinath. And I think it was lovely to have you on the podcast to speak about overall muscle rehab and things and stuff. So that is it for the day. And thank you so much, Shrinath, for being on the podcast. And I hope to see you soon. Thank you so much for having me. It was a nice experience as it is my
first podcast. Sounds good with Yes, me. yes, with you. And मैंने देखा नहीं है कि आज तक फिजियोथेरापी का भी कोई पॉडकास्ट हुआ है. Uh, So, so it's good to have yes. have this and get the people to know. So basically what we are doing is we are making people more aware regarding this profession and regarding about what to do and what not to do if they are having any injuries or Okay. any other conditions. I hope people would have got some valuable advice from this podcast with Shrinath, and wish you all the great speedy recovery, and hope to see you in the next episode really soon. Thank you so much. Thank you so much for listening to this podcast. Do subscribe the channel and share it with your friends and family. You can stream all the episodes now on all the major streaming services. See you in the next episode.